अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज के जो मेरा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तमाम इंडेफिनाइट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी उसकी वीडियो तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लें। आप लोग की आसानी के लिए मैं आई बटन में वो वीडियो डाल दूंगी, आप लोग उससे इजीली आप लोग वहां पर क्लिक करके पहुंच जाएंगे। और अगर आप लोग को तमाम वीडियोस देखनी हो तो मेरी टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह की उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके वहां पर आप लोग को तमाम वीडियोस मिल जाएंगी इजीली। तो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब ये है कि देखें कोई भी काम जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और इट इज इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, अभी खेलना स्टार्ट किया और अब वो अभी काम चल रहा है, मीन्स वो लोग खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग का मतलब है कि वो अभी खेल रहे हैं, मतलब उनका खेलना अभी रुका नहीं है। ठीक है, तो सिंपल इसका मतलब ये है। और देखें एक और बात बतानी थी कि देखें प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक फर्क होता है। एक मतलब फर्क तो यकीन बोथ आर डिफरेंट, लेकिन एक ऐसा फर्क मैं आप लोग को डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि देखें प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि कोई काम जो है ना वो परमानेंटली होता है कि रोज काम होता है, वो परमानेंट काम होता है कि वो सुबह जल्दी उठती है। लेकिन जैसे कि ही गेट्स अप अर्ली, लेकिन कंटिन्यूअस में वो कोई भी काम जो होता है वो एक एज अ टेम्परेरी होता है। जैसे कि ही इज गेटिंग अप अर्ली, इसका मतलब ये है कि वो अभी कुछ दिनों में ही या अभी कुछ वक्त के लिए वो जल्दी उठ रही है। और एक प्रेजेंट टेंस में ये है कि वो जल्दी उठती है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस में कोई भी काम परमानेंट रहता है, कंटिन्यूअस में जो भी काम होता है वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी तौर पे होता है। जबकि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी काम होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। और एक और बात कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब भी कंटिन्यूअस में ही आता है। ठीक है, विच इज एन कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। नाउ द हेल्पिंग वर्ब विच इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी वर्ब, हियर द हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। एम इज मतलब इज एम आर। ठीक है, एम इज यूज्ड विद आई, इज आर इज यूज्ड विद you, we, they, and any plural noun are is used with these. And the last one is he, she, is जो है वो helping verb जो है वो he, she, it और any singular noun के साथ इस्तेमाल होता है। These are the helping verb. Now the construction of the present continuous or a present progressive is affirmative में subject plus helping verb which is MR. Now the verb की कौन सी फॉर्म है? present participle form which is also called as ing participle, and the last is object. Now the negative, the construction in the negative is subject plus helping verb plus not verb की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाता है व्हिच इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। नाउ द आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हियर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेजेंट वर्ब की जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू put question mark at the end in interrogative and in interrogative.
Now the last one is interrogative. Here the helping verb is in first, then subject, then not, then verb present participle form, then object, and then question mark. Now the construction is complete. Now we move to the examples. Now the example of is, am, are is here. First we move to the example of am. Here the example is, I am reading a book, which is an affirmative. Now in negative, I am not reading a book. Here in negative we only add the not, then it is converted into negative from affirmative. Now the third one is of interrogative, which is, am I reading a book? And the last one is, am I not reading a book? Question mark is important. Okay, now we move to the example of is. He is reading a book. He is not reading a book. Is he reading a book? Question mark. Is he not reading a book? Question mark. देखिए I मैंने आप लोग को बताया था कि I is used with am and he she it के साथ और कोई भी singular noun के साथ is used होगा and are is used with we, they, you and any plural noun. Okay, so the R is so the example of R is, students are reading a book. Students जो है वो plural noun है, तो इस वजह से उसके साथ R इस्तेमाल हो रहा है. Students are reading a book. Students are not reading a book. Are students reading a book? Question mark. Are students not reading a book? Question mark. These are the examples. You have to practice it. So your tenses. You have a command on these tenses. So okay, my video is complete. If you like the video, share it and subscribe my channel. Click on the bell icon so you get the new video notification of the new video. And take care. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad.